Okay, good afternoon, Nilza, Sonam, and Sering. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good Good afternoon. afternoon, Vidya. Good afternoon. Last day we started discussing potential difference, I guess. We discussed about what is electrostatic potential difference. We discussed the meaning of electrostatic potential also. Ab, we will be finding the value of potential due to a charge. But before I do that, before I do that, आपको मुझे ये बताना है कि मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन, very basic question, very simple question which I am asking you. Simply I am asking you कि if this point A has a potential of 10 volts and I took a particle from this A to B, ठीक है, where the potential of the point is 30 volts, unit of potential is volt, right? You can write V for volt. So I have taken this particle from A to B and at A potential was 10 volt, at B the potential is 30 volt. तो आपको बताना है कि if the value of charge which is being taken from this A point to B point is 2 microcoulomb, then what is the work done in moving the charge from point A to point A? Work done is equal to what in moving the charge from A to B. पहले तो आपको ये बताना है कि what will be the work done in moving the charge from the point A to the point B. You just have to calculate the work done. That's it. 4 into 10 raised to the power minus 5. Okay, you got the answer as 10 to the power minus 5. चलो देख लेते हैं. सिंपल सा पॉइंट है कि सर हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस. We know that potential difference VB minus of VA is written as work done in taking the particle from A to B divided by the charge. That is what we are supposed to do. And what is the value of this potential at B? So it is 30 and potential at A is 10. Work done will be this we are supposed to calculate, and the charge is 2 microcoulomb, which we need to convert it into coulombs. So that will be 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. So work done will be equal to 30 minus of 20 is 10 is 20 multiplied by 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. So work done is equal to 40 into 10 to the power minus 6. So work can even be written as 4 into 10 to the power minus 5 joule. This is the value of the work done. I hope everyone has understood this. Everyone Yes, has sir. understood this. Okay, good. Everyone has understood this. Okay, now we are in position to drive the result of potential due to a charge. So write the topic electric potential due to a point charge. Write the name of the topic electric potential due to a point charge. 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 आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब कैसे निकालेंगे तो देखिए सर, अब कैसे निकालते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन. दिस मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. ठीक है, तो इसलिए इस डेरिवेशन को वी विल revise the derivation so that if it is asked we can write the result or we can drive it. तो देखो, मान लो कि सर ये assume कर लो कि we have a charge q and due to this charge at this point I want to find out the potential due to this charge and let this point be a. इस चार्ज का हमें पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पर. ठीक है, इस चार्ज का हमें पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट ए. ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है एंड लेट्स से कि दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम दिस चार्ज. ये पॉइंट जो है हमारा वो आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द चार्ज. क्लियर है, सबको समझ आ रही है बात कि इस Yes. पॉइंट पे हमें निकालना है. तो इसके लिए हम करते क्या है बेटा, हम कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से आई एम अज्यूमिंग अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द चार्ज क्यू. मैंने कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, मुझे निकालना है पोटेंशियल ए पर. मेरा एम यह है कि आई वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट ए. But to find the potential at A, I am assuming some another point which I am taking it as a distance of x. ठीक है, from this source charge Q. ठीक है, और यहाँ पर हम assume कर लेते हैं कि एक चार्ज हमने Q नॉट रख दिया है. placed a charge Q नॉट at this point. ठीक है, इस पॉइंट पे हमने एक चार्ज रख दिया. ठीक है, जिसका नाम है Q नॉट. तो बेटा एक बात तो ऑब्वियस है कि this Q नॉट will experience a force of repulsion like this. इधर फोर्स लग रहा होगा. This will be obviously the electrostatic force. This is the electrostatic force.
है ना, at this distance, because both the charges are positive, तो this will be repelled by the source charge. तो आप इमेजिन करो कि अगर मैं इस चार्ज को मूव कराऊं, ठीक है, यहां से, ठीक है, टू सम पॉइंट, मैं इस चार्ज को मूव कराऊं बाय अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, अगर मैं इस चार्ज को मूव करा रहा हूं बाय अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, समझना, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं कुछ p एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज q, तो ये खुद से मूव हो जाएगा या आई विल हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव इट? We have to apply some external We have force. to apply, of course we have to apply some external force to make it move from the point p to q, because यहाँ पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है, तो आई हैव टू बैलेंस दिस फोर्स. तो पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि F external must be equal to F electrostatic. Why? Since I want acceleration of the charge to be equal to 0. ठीक है, तो इसलिए मुझे दोनों फोर्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर. अब आते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. तो आई टोल्ड यू दैट इट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मुझे उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, द सेम वैल्यू ऑफ फोर्स आई हैव टू exert जितना वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q naught upon x square, because this charge I have taken at a distance of x. तो 1/4 pi epsilon naught q naught divided by x का स्क्वायर, ये तो पहली बात हम लिख सकते हैं. तो अगर हम ये पहली चीज लिख सकते हैं तो बेटा व्हाट विल बी द वर्क डन. अब देखो आई एम कैलकुलेटिंग द वर्क डन, ठीक है, आई एम कैलकुलेटिंग द वर्क डन. अगर मान लो कि ये मैं वर्क डन निकालूं, अब यहाँ पर दो काम आप कर सकते हो, आइदर यू कैन फाइंड दिस वर्क डन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यू कैन फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, आपकी मर्जी है. नहीं आई बात समझ में? या तो आप वर्क, यू कैन फाइंड द वर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यू कैन फाइंड द वर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, ये तुम्हारी मर्जी है. अगर आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं तो मैं सिंपली एक बात बताऊं कि अगर मैं इस बॉडी को इधर मूव करा रहा हूं, सॉरी, अगर मैं इस चार्ज को मूव करा रहा हूं टुवर्ड्स लेफ्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, तो मुझे एक बात बताओ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मुझे लिखना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज dx मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 180 डिग्री लिख सकता हूं? डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? बिकॉज वर्क डन होता क्या है सर? वर्क डन एफ डी एक्स कॉस थीटा होता है, इफ यू कैन रिकलेक्ट whatever you have studied in class 11th, if you can remind that. सर ये समझ आया? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए. बेटे आपको ये बात समझ में आई है मैंने क्या किया है? Yes, sir. ये cos 180 मैंने क्यों लिया है? बिकॉज दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बोथ आर ऑपोजिट. तो अगर दो क्वांटिटी, अगर इफ दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, द एंगल वुड बी 180 डिग्री. So that is why I have written it as f dx cos 180 degree. So this will be equal to minus of f electrostatic multiplied by dx. I hope you have understood till here. So I'm writing the next step here. Work done would be equal to, for this you can put the value of electrostatic force which is 1/4 pi epsilon naught q naught upon x square dx. Am I right? Yes, sir. नोट करो यहां तक, फिर आगे बात करते हैं. Done, sir. No, sir, please wait. I said wait. Sorry.
Sir, is it done? Yes, sir. Okay, so I'm erasing this now. Let's go to the next step of this derivation. तो सर पहली बात तो ये कि this is the work done, but this work done we have calculated only for a small displacement of the charge. ठीक है? But अगर आप सोचो, imagine करो कि if you are bringing the charge from infinity, अगर आप imagine करो कि if the same charge would have been brought from infinity to this point, ठीक है, to this point, then we had to work from moving the charge from infinity to this point. मतलब हमारा जो ये work होता, that would have been the sum of all the work done which we will be doing in going from infinity to the point A. नहीं यही बात समझ में, मतलब हमारा जो वर्क करना पड़ेगा वो हमें कहां से कहां तक करना पड़ेगा. I'll have to perform work from starting from infinity till this point A, जहां तक हम पहुंचने, समझ रहे हो. तो इसका मतलब to calculate the total work done I'll have to integrate this quantity, and where from should I integrate it to, till where? So I should integrate it from infinity to the point A, which is at a distance of r. Are you getting what I'm saying? Please tell me yes or no. Yes, sir. Sir, can you answer me a question? Can you give me answer to my question? Why are you taking one point at infinity? You could have integrated this from this point to this point also. But why are you saying, let us integrate it from infinity to this point? Why are you doing that? Why are you not taking any other point other than infinity? कोई बता सकता है मुझे कि आप क्यों एक पॉइंट इंफिनिटी पे ले रहे हो? आपको एक पॉइंट कहीं और भी तो ले सकते थे. मान लो कि अगर ये चार्ज है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट 10 सेंटीमीटर, तो आपको अगर यही करना है तो यू टेक द अदर पॉइंट एट 20 सेंटीमीटर एंड देन यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 20 to 10. बट व्हाई आर यू टेकिंग वन ऑफ द पॉइंट एट इंफिनिटी? कौन बताएगा मुझे? Nilza, Sonam, Diangmo, Sering, who will answer me? Stands in. सर अगर इंफिनिटी से लिया तो हमारा वैल्यू 0 आएगा और तो वेरी गुड, वेरी गुड. अगर इंफिनिटी से लिया तो हमारा इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है दैट विल बी 0. तो वन ऑफ द पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर we cannot calculate the potential at a point. What we can calculate is the potential difference. तो अगर मैं किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल मुझे 0 मिल जाए तो डिफरेंस विल बी सिंपली इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. यही कल बताया था कि अगर आउट ऑफ द 2 पॉइंट 1 इज एट इंफिनिटी तो एट इंफिनिटी पोटेंशियल विल बी 0. तो डिफरेंस जो होगा ना, जो डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे, that will be exactly equal to the value of potential, exactly equal to the other point. तो ये कर सकते हैं. That is why I am doing this. तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको टोटल वर्क डन निकाल लेना है. You will Excuse integrate me, this whole sir. quantity. Yes, excused, बोलिए. Sir, Tell one me. doubt. What one? Sir, Once more. the Should I external repeat? force should be equal to negative of electrostatic force now. Yes, of course. Electrostatic force and external force will be equal in magnitude but opposite in direction. So either you write the work done according to the electrostatic force, then also ultimately you will get. अगर मैं electrostatic force के according work लिख रहा हूँ, तो I'll have to put a sign of I'll have to put angle as 180 degree. Then also I'll get this as minus of F electrostatic multiplied by dx. Or else if I am calculating the work done due to external force, तो external force is opposite to electrostatic force. तो अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो इस डायरेक्शन को you will have to take as negative, because external force तो आप इस डायरेक्शन में लगाओगे. Then also it will be minus of f dx, and for external force and displacement are in same direction, so theta would be 0 degree, so this will be written as minus of f dx. So ultimately you will be getting the same. Is it clear, beta? Yes. Ultimately the formula of the work done you will be getting the same. Either you calculate it with from electrostatic force or you solve it by the external force, you will be getting the same result for both. Okay, so this is the work done. So q naught upon 4 pi epsilon naught with a negative sign. This from infinity to r. Is there any issue with anyone? यहाँ तक clear है? I will write the integration part directly. The integration of 1 upon x square is minus of 1 upon x infinity to r.
Is everyone convinced with the integration, or should I tell you the formula, which formula I've used to integrate this dx upon x square? मैं फिर भी बता देता हूं, dx upon x square can be written as x to the power minus 2 dx, and the formula for the integration is the power plus of 1 divided by minus 2 plus of 1. If you'll do this, you will get x to the power minus 1 upon minus 1, which can be written as minus of 1 upon x. Is it clear, or should I repeat this again? Bolo. Clear, sir. This minus and this minus multiplies to become plus. So hence it will become q naught upon 4 pi epsilon naught, and it will become positive. This is 1 upon r minus of 1 upon infinity. And we know that 1 upon infinity is 0. So work done would be equal to q naught upon 4 pi epsilon naught r. This is the work done. We had to find the value of potential, but what we have got till now is the work done. So hurry up, इसको note कर लो. तो finally we'll write the value of potential. Is it done? Yes, sir. Everyone please respond. Should I erase? No, sir. Yes or no? I didn't get you properly. No, sir. Okay, so I'm waiting. Inform me once you note it completely, inform me so that I can write the next step. Is it done now? Done. Okay, so I'm going to erase this and finally I'll write the value of potential. But I would like to ask you, can you tell me if I know the value of work done, how we will calculate the value of potential? Who will tell me? If I know the work done, how should I calculate the value of potential? Who will tell me? अगर मुझे वर्क पता है तो पोटेंशियल कैसे निकालूं बेटे? Sir, work done or potential same. सेम तो नहीं होते बेटा. How can we Potential calculate the difference value of equal to work potential? done upon charge. Work done upon charge, सिंपल सी बात है. मतलब पोटेंशियल बेटा क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. अच्छा एक बात बताओ, हियर आई एम हैविंग टू चार्जेस, वन इज क्यू, अनदर वन इज क्यू नॉट. तो फ्रॉम विच चार्ज शुड आई डिवाइड दिस वर्क डन? वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू और क्यू नॉट? व्हाट चार्ज आई विल राइट इन द डिनोमिनेटर? Q naught. Q or Q naught? Do not. Q naught. If you remember, okay, the charge which is to be used is that charge which is being moved, right? So the यहाँ पर जो charge move करा रहे हो आप, that is Q naught. This is basically the source charge whose potential you are calculating, and this is a charge which you are moving. तो इस पे आप force measure कर रहे हो ना? तो the charge on which you are measuring the value of force, or the charge which is being moved in the field, that charge has to be used in the division, right? So if you'll do this, so you will write this as q naught upon 4 pi epsilon naught r upon q naught. Ultimately q naught and q naught will cancel out, and finally you will get the formula of potential due to a single charge at any given distance.
ठीक है, and what will be that value of potential due to a charge? It will be simply equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. This is the formula of potential. You can even write this as KQ upon R, where 1 over 4 pi epsilon naught, I have written this 1 over 4 pi epsilon naught as K. But remember, till now, when we were solving for electrostatic force, or we were applying the formula for the electric field, we used the magnitude of charge. We didn't consider the sign of the charge. Although the charge was negative or positive, but we only used its magnitude. We didn't consider its sign. But in the case of potential, you will consider the sign also. Are you getting what I'm saying? Okay, if the charge is negative, you will put the negative sign in the formula. And if the charge is positive, you will put the positive sign in the formula. That means electrostatic potential can either be positive or it can be negative depending on the charge. It will be positive if the charge is positive, and it will be negative if the charge is negative. The potential can be positive or negative depending on the charge or the sign of the charge. Means at a point, if you are getting potential to be negative, it will simply mean that the charge at that point is negative. And if at a point potential comes out to be positive, it will simply mean that the charge at that point is positive. I hope whatever I discussed is clear to all. Can I erase it now? Yes, sir. Okay, everything is clear to all, whatever we have discussed till now. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so before I go to the question part, or before I go to the derivation part, है ना, rest we have to discuss the potential due to dipole at different points. So before I do that, उससे पहले I would like to make a comparison between the electric field due to a charge and the potential due to a charge. ठीक है, we have already discussed the electric field due to a charge, and we have now discussed the potential due to a charge. So I'll just make a comparison of the two formulas that we have got. देखो, if you have a charge, let's say, whether it be positive or negative is not a big deal. Magnitude wise तो कोई मसला नहीं है ना. तो अगर if there is a charge and this is the distance, so at this point electric field will be written as kq upon r squared if this distance is r. If there is a charge, same charge, and at the same distance, the potential will be written as kq by r. Is it clear to all? अगर आप Yes, देखो sir. तो आपको ये दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. मतलब बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि if you will increase the distance, what will happen to the value of electric field and potential? If you will increase the distance, so what will happen to electric field and potential? Obviously it will decrease Decrease. because it is inversely proportional. Similarly, if you will decrease the distance, the electric field and potential will increase because it is inversely proportional, right? So because both are inversely proportional, if you will draw the graph for electric field versus R, and if you draw the graph, I'll draw the graph first separately and then I'll draw the graph in a combined way. And if you draw the graph of potential versus R, so of course, for an inversely related quantity, the graph is always like this. It is called as rectangular hyperbola in mathematics. I don't know whether you have your mathematics as a subject or not, but in mathematics, we call it as rectangular hyperbola, and this will be the graph. Is it clear to all? Please tell me yes or no. The graph will be rectangular hyperbolic. Here E is inversely proportional to R square and where V is proportional to R. यहाँ तक clarity है? Have you taken this? Did you note this or not? Hurry up. Yes. नोट कर लो जल्दी से, तो मैं आगे के डिस्कशन पे आता हूँ. मुझे जो बेसिकली कंपेयर करना है, एक तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये तो सिमिलैरिटी दिख रही है आपको. You saw the two similarities between the electric field and potential, and what are those similarities? So you have seen that कि both are inversely related to the distance. वो एक अलग बात है कि आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और ये आर पे डिपेंड कर रहा है, वो एक अलग बात है, बट बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस एंड द ग्राफ ऑफ बोथ विथ
R will be a rectangular hyperbola. ये आपको दिखाई दे गया. अब मैं एक और चीज को कंपेयर करना चाहता हूं. Can I erase this part? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Everyone. चलो भाई. Yes, sir. Stanzin, Yes, sir. Nilza. Okay, good. अब मेरा एक पॉइंट सुनो. अगर मैं आपसे कहूं कि the value of R, I am taking the value of R same. I am taking the value of R to be same. मान लो कि ये चार्ज है, ये Q, और मैं R की वैल्यू मान लो कि मैं लिख देता हूं 2 मीटर्स, है ना, आसानी के लिए. मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, एंड यहां पर फिर से वही चार्ज, सेम डिस्टेंस 2 मीटर, और मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट. तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, है ना, ये तो लिखोगे आप, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन 4, राइट. पोटेंशियल अगर आप लिखोगे तो के क्यू डिवाइडेड बाय 2, राइट. तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो दिस इज 0.25 टाइम्स ऑफ के क्यू, एंड पोटेंशियल देखो तो 0.5 टाइम्स ऑफ के क्यू. If I ask you out of these two, which value is greater, V or E? Which is greater? V. V. V, of course V. Although you have taken the same distances, but you are getting the value of potential to be greater than that of the value of electric field. इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि if you change the value of R out of electric field and potential, which of the two will change more? Potential will change more for the same change in R, or electric field will change more for the same change in R? Electric field. Field. Electric field. नहीं 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 नहीं, तुम नहीं समझे, तुम नहीं. किसमें चेंज ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा होगा या पोटेंशियल में चेंज ज्यादा होगा? चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी ग्रेटर और चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर. नहीं समझ में आया. इन दोनों में कौन ज्यादा है? Potential. पोटेंशियल ज्यादा है. तो भाई जो ज्यादा है वही तो ज्यादा चेंज हुआ ना. अगर मैं बेटे आपसे ये बोल दूं कि अगर मान लो कि मैं किसी, मतलब मैं चेंज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये ऐसे समझो कि मैं आपसे कहूं कि r इज इक्वल टू 0 से मैं r इज इक्वल टू 2 मीटर पे गया, मान लो इस केस में, और यहां पर भी 0 से मैं 2 मीटर पे गया, ठीक है. तो मतलब अल्टीमेटली मेरे r की वैल्यू 2 है, यहां पर भी 2 है, मतलब चेंज ऑफ r मेरा कितना हुआ? 2 मीटर, और यहां पर भी चेंज ऑफ r कितना हुआ? 2 मीटर. तो इस चेंज ऑफ r के लिए पोटेंशियल, यहां पर अगर हम देखेंगे तो पोटेंशियल 0 है, बट यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया? 0.5 के क्यू. समझ रहे हो? और यहाँ पर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0.25 के क्यू. अब मुझे एक बात बताओ, विच ऑफ द टू हैज चेंज्ड मोर? Potential. ऑफ कोर्स पोटेंशियल. और वैसे भी अगर आप, इफ यू कैन रिकलेक्ट फ्रॉम योर बेसिक मैथमेटिक्स, तो यू नो दैट कि जिसका डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर उसका रिजल्ट विल बी स्मॉलर. Yes. Out of electric field and potential, whose denominator is greater? So denominator of electric field will always be greater because it is a square times of R. समझे? इसका Yes, क्या sir. मतलब है? इसका मतलब याद रखो कि for the same change of R, the change in potential is greater than that of the change in electric field. इस पॉइंट को नोट कर लो, और उसके बाद मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूं कि for the same change, sorry, for the same change, for the same change in R का मतलब in distance, change of electric potential is more than the change in electric field. I hope मेरी बात सबको क्लियर होगी. तो इसलिए बेटा अगर if you combine the graph of both of electric field and potential, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो बेसिकली ये कि अगर if I draw the graph
of electric field and potential in a combined way. तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि I'll get obviously two rectangular hyperbolas like this. एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगा और एक पोटेंशियल के लिए आएगा, है ना। मैं दोनों के ग्राफ को साथ में ड्रॉ कर रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगा और एक पोटेंशियल के लिए आएगा। तो देखो ये दूसरा वाला ग्राफ मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नन ऑफ देम इज टचिंग द एक्स एक्सिस, बट समझ लो। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो रेड वाला ग्राफ है, दिस ग्राफ विल बी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है, दिस ग्राफ विल बी रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल। अब आप ये मुझसे पूछ सकते हो सर व्हाई इज सो, बिकॉज इफ यू लुक ऑन बोथ द ग्राफ्स, तो आपको ये बात समझ में आएगी, आपको एक बात समझ में आएगी कि इस आपको एक पॉइंट समझ में आएगा कि सर यहाँ पर पोटेंशियल का चेंज इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब अगर मैं दोनों ग्राफ को साथ में ड्रॉ करूंगा तो पोटेंशियल का ग्राफ नीचे बनाना और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऊपर बनाना। इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट, प्लीज टेल मी। क्योंकि मैंने क्या बोला कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आर किसका चेंज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का या पोटेंशियल का? पोटेंशियल। Potential. तो इसलिए पोटेंशियल का चेंज ज्यादा, तो इट विल बी मोर स्टीप, है ना। इसको स्टीप कहते हैं ना, ज्यादा स्टीप हो गई। द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल, आप इसको चाहो तो यू कैन राइट इन वर्ड्स, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस विल बी स्टीपर, मतलब उसका स्लोप ज्यादा होगा, विल बी स्टीपर देन द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द डिस्टेंस। मैं लिख देता हूं, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल with distance will be steeper than the graph of electric field with potential, sorry, with distance. नोट करो जल्दी से, जल्दी, हरी अप नाउ। इन्फॉर्म मी, जब आप नोट कर लो तो मुझे बताओ। डन बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बच्चे मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी की चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से इसको जल्दी जल्दी देखो, क्वेश्चंस करते हैं सर। क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन, बहुत कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं, पहले बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम एक दो अच्छे सवाल भी कर लेंगे। सर क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। सर बेसिकली आपसे ये बोला जा रहा है ना कि ये कोई बॉडी है, बहुत छोटी सी बॉडी है, इसको पॉइंट साइज बॉडी आप मान सकते हो, ऐसा समझो। आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि इस बॉडी का, ये बॉडी का साइज नेग्लिजिबल है और इस बॉडी से एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 4 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। बट आपको सिंपली ये बोला कि इस बॉडी में कोई चार्ज गिवन नहीं, आपको कोई चार्ज नहीं बताया उसने। आपसे बोला कि इनिशियली द बॉडी वाज न्यूट्रल। मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख देता हूं, इनिशियली बॉडी वाज न्यूट्रल। क्या मतलब है इस न्यूट्रल का? हु विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी बीइंग न्यूट्रल? No कौन charge. बता रहा है? नो चार्ज, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं द सेम इज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट मींस द बॉडी हैज जीरो चार्ज एज अ होल। Initially body was neutral, then 10 to the power 20 electrons are taken out, yeah, are taken out from the body, taken out from
the body. ठीक है? Calculate electric potential due to the body at 4 centimeter. Did you understand the question? मतलब you can treat it as a point charge, but उसका charge आपको given नहीं है. आपको ये बोला गया है कि this much of electron has been taken out from this body. Who will tell me how should I solve? कौन मुझे बताएगा कैसे सोचें इसको? V कोई तो बताएगा. Yes, V is equal to what बेटा? K Q KQ सही by बात. R. KQ by R. But do we know the value of Q here? No, Do sir. we know the value of Q? So how we will calculate the value of Q then? Because we don't know the value of Q. So we need to We find will out have the sir, value it of Q will first. be 10 to the power 20. Good. First of all, for Q, we will have to apply this called as quantization of charge. Very good. So quantization of charge simply is in the value of n is 10 to the power 20 multiplied by 1.6 into 10 to the power minus 19. So this will be equal to 1.6 into 10. Matlab, this will be equal to 16 coulombs, right? Yes. This is the value of charge. So if we have got this much of charge, finally we can write the formula of kq divided by r. अब ये कोई बहुत rocket science नहीं है. 9 into 10 to the power 9 multiplied by 16 divided by r I have given as 4. So 4 into 10 to the power minus of 2, because you need to convert it into meters. 4 is the 16. So 9 into 4 will become 36, if I'm not wrong. Multiplied by this will be equal to 10 to the power 11 volts. This is the value of potential. Am I right with the simplification? Please check. Yes, sir. Okay, so moving on to the next question now. मैं इरेज कर रहा हूं इसको. Okay, sir. Okay, going to the next question. It was asked in way back in CBSE, but yes, you can solve this question. A charge of 24 microcoulomb. नहीं, इसको मत solve करो because hollow sphere का अभी मैंने बताया नहीं. देखो आपका क्वेश्चन है कि देयर इज अ चार्ज. इट वाज आल्सो आस्क्ड इन सीबीएसई, जो भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं. इट वाज आस्क्ड इन द ईयर ऑफ 2003. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सुनो. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट अ पॉइंट ए. ये चार्ज है ए पे रखा हुआ है, ये बी पॉइंट है. इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वाज गिवन एज 24 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी ड्यू टू द सेम चार्ज इज 12. यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू दैट इज 12 volts. Did you understand? At the same point they have given you the value of electric field due to the charge, and they have given you the value of potential due to the same charge. ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है? what you are supposed to calculate. तो you have to just calculate the values of the charge. आपको कैलकुलेट क्या करना है? You have to find the value of charge. कि क्या फाइंड करना है? आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है. And you have to find this distance at which this electric field and potential is given. Is it clear to the to all? Did you understand the question? Yes, sir. Okay. So how will you solve? I know the value of electric field at that point and I know the value of potential also at that point. और मुझे ये बताना है कि sir, what is the value of the charge and what is the value of distance at which we are doing this?
चलो मिलके करते हैं। देखो पहला पॉइंट तो ये बेटा कि कैन आई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड फॉर द पोटेंशियल इट शुड बी रिटन एज के क्यू डिवाइडेड बाय आर. If I divide the two, this is 1, this is 2, divide the two. So what will you get? If I divide V by E, so this you will write as V by E KQ upon R multiplied by R square by KQ. Is there any issue with anyone? क्या सबको clear हो गया? R से R cancel हो जाएगा. So finally what can I write? I can write simply R is equal to V upon E. You know the value of V? You know the value of E? So that will be equal to 12 by 24. So R will be equal to 1 by 2 meter or R equal to 0.5 meter, whatever you want to write. Is it clear? Please tell me yes or no. We have got Okay. the value of R. Now you can substitute the value of R either in the formula of electric field or you can put it in the formula of potential and you can find the value of charge. For example, मान लो R की वैल्यू को मैं इसमें रख दूं सेकंड इक्वेशन में, तो I know the value of potential is 12. K, I know the value of K as 9 into 10 to the power 9 multiplied by charge, which I am supposed to calculate for, divided by distance, and distance is how much? The distance is 0.5. So charge will be equal to 12 multiplied by 0.5 divided by 9 into 10 to the power 9. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 upon 9 into 10 to the power 9. Or you can write this as 2 by 3. 3 to the 6, 3 3 is the 9, and you take this in the numerator, so this will become 10 to the power minus 9. This much of charge, 2 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. ठीक है, 2 into 2 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. This is the value of the charge. Is it done? One more question and then we'll go to the next topic. Can I erase this? Tell me, beta. Is it clear to all? Please tell me, everyone. Yes, If you sir. have any issue, you can Yes, ask. sir. Sering, Stanzin, don't be shy of asking any question. If you don't understand, you can ask and confirm. ठीक है, hesitate नहीं करो and don't get shy. कोई तुम्हारा जानने वाला नहीं है और होता भी तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें अपना एग्जाम देना है. तो इसलिए प्लीज with honesty ask if you have any doubt or wherever you get a doubt you can ask. चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, उसके बाद we'll go to the next topic. देखिए वन मोर क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन आई राइट द क्वेश्चन, होल क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. 27, इतना क्यों लिखूंगा मैं, सिंपली ऐसे लिखूंगा 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच. इसका मतलब each of the drop is being charged with a value of 220 volt. इसका मतलब हर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना है? 220. भाई if you are charging a drop with a certain value of potential, इसका मतलब है कि उस ड्रॉप का भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितने पोटेंशियल से आपने उसको चार्ज किया है. ठीक है, दे कोलीज, या कोलीज को आप नॉर्मल शब्दों में कह सकते हो दे कंबाइंस. ठीक है, ड्रॉप्स आर कंबाइनिंग देमसेल्व्स, दे कंबाइंस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप. ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं. क्या करने के लिए? एक बिगर ड्रॉप बनाने के लिए. कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप. पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप. ठीक है, बात समझ में आई? यहां तक क्लैरिटी है? मैं इसमें एक पॉइंट पहले तो बता दूं कि ड्रॉप कैन बी अज्यूम्ड एज ए स्फीयर. ड्रॉप कैन बी कंसीडर्ड, ये मैं सॉल्यूशन का पार्ट लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं है. कंसीडर्ड एज ए स्फीयर
कंसीडर्ड एज स्फीयर्स, ठीक है, जिसके पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। समझे? और ये पोटेंशियल जो होता है ये सरफेस पे होता है, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, मतलब ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर। ये जो मैंने रेड से लिखा है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ऑल्दो वी विल ड्राइव इट लेटर ऑन इन द सेम चैप्टर, बट अभी फिलहाल यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर is basically kq by r, where r is the radius. ये सब पूरा लिख लो तो जल्दी से, प्लीज नोट एवरीथिंग whatever I have written on the screen, then I'll solve the question. r is the radius, q is the total charge of the sphere, और k is electrostatic constant. आपको you are supposed to calculate the potential of the bigger drop, तो पहले तो आप इतना लिख लो। Done, sir. Done. अब पॉइंट सुनो, there were 27 small drops without any doubt. Can I erase this? Please tell me Yes, sir. if everyone is done. Okay. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली क्या है कि 27 small drops are there. Obviously these small drops will have some radius, right? And they combines to form a bigger drop. So bigger drop will also have some radius. Is it clear? मान लो कि radius of, why I am talking about radius, because in the formula of potential kq by r, r is the radius, so you need to have the value of radius, then only you can find the value of potential. So Yes. radius of each small drops is r. मैंने सारे स्मॉल ड्रॉप्स का जो रेडियस मान लिया वो कितना मान लिया, तो रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप को मैंने मान लिया स्मॉल आर। अब मुझे एक बात बताओ कि व्हेन दीज स्मॉल ड्रॉप्स विल कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, ठीक है, तो उस बिगर ड्रॉप का भी कुछ रेडियस होगा। मान लो Yes, sir. रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इज कैपिटल आर। Can any one of you tell me what will be the relation between a small r or capital R? How can we find this relation? A small r or 27. capital R? बोलो। Capital R is equal to 27 small r. Very good. And how did you get that? It is not the complete exact answer, but how did you reach to this conclusion? Sir, because there are 27 drops which are of same size. Yes, they combines, then the size of the final drop will become 27 times. This is Yes, what sir. your idea. No, it doesn't happen better in that way. है ना? It happens in a way कि अगर if all of these drops will combine to form a single drop, then the volume of that single drop will be equal to the volume of 27 drops, not the area, not the size. समझ में आई बात? Yes, If a sir. small things combines to form a bigger thing, so what remains same is the volume, not the area, not the size. What remains same is the volume. Did you understand, everyone? Yes, Yes. sir. Yes, sir. इसका मतलब है we can write 27 multiplied by 4 by 3 pi r cube. This is the formula of the volume of one sphere. So if you have 27 sphere, the volume of 27 spheres will be equal to the volume of this single sphere, which is 4 by 3 pi r cube. So this 4 by 3 pi, this 4 by 3 pi will cancel out. So this will be equal to 27 r cube is equal to capital R cube. If you'll solve this, you will get r is equal to 3r. This is the Yes. relation. राइट अब हम पोटेंशियल लिख सकते हैं, चलो हम पोटेंशियल लिखते हैं। पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉलर वंस, ठीक है, व्हाट विल बी दैट, तो दैट विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, बिकॉज चार्ज ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज क्यू, रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज आर, and k is the electrostatic constant. And how many drops do we have? 27. The net potential of 27 drops will be equal to kq by r into 27. Is it correct? Tell me. Yes, sir. And what would be the potential of bigger drop, bete? It will be k multiplied by the charge of the bigger drop. Who will tell me what will be the charge of the bigger drop? Every small drop has a charge of q, so bigger drop will have a charge of 27q. Very good. Divided by the radius of the bigger drop. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
This will be written as 27 kq upon radius of the bigger drop can be written as 3 times of a small drop. Is it clear? Yes. Let me call this as 1. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 27 kq upon a small r, don't you think it is equal to potential of the smaller sphere? Yes, sir. Tell me, है ना? इसका मतलब potential of the bigger sphere is nothing but the potential of a smaller sphere divided by 3. And what is the potential of the smaller sphere? So that is equal to 220 3. divided by what? Divided by 3. 3. Is it done? Yes, sir. Yes. Everyone? Okay, I think everyone has done this. Everyone had understood also okay, how we have done this question. Is there any doubt to is there any doubt which you want to clear? Everything is clear to all? Tell me. सबको क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब सुनो, एक छोटा सा पॉइंट आज सुन लो, उसके बाद फिर हम इसको यूज करेंगे in the next class, and that point is that I am going to talk about is superposition principle again. बहुत छोटा सा पॉइंट, हम कुछ लिखेंगे नहीं इस पर. Superposition principle of potential or electric potential, principle of electric potential. You don't have to write anything, just listen to it. Electric potential, क्योंकि आपने ये superposition principle you have heard it earlier also in the case of electrostatic force, in the case of electric field. अब पोटेंशियल का केस भी तो यही होगा ना सर. अगर मान लो एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 एंड एक चार्ज है Q3 एंड दिस इज द पॉइंट. ठीक है, तो अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. तो हाउ मेनी पोटेंशियल वी विल बी हैविंग एट दिस पॉइंट? 3. Obviously 3. So of course what should I do? I should write net potential as V1 plus V2 plus V3, and because potential is a scalar quantity, so this will be simply added algebraically. तो इसका मतलब क्या है सर? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली tells that the net potential at a point due to any number of charges will be the algebraic sum of all the individual potential due to individual charges. Did you understand? तो क्या करेंगे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे और सिंपली ऐड कर देंगे. दिस विल बी कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. और याद रखो ये सम कैसा होगा? दिस सम विल बी एल्जेब्रिक सम. क्लियर? व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो ये तो ज्यादा आसान हो गया ना. एल्जेब्रिकली ऐड करना इज मोर इजियर देन वेक्टोरियली ऐड करना, तो ये तो और ज्यादा आसान हो गया. तो यहाँ पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है और सेम है, बस डिफरेंस ये है कि टिल नाउ वी वर एडिंग द क्वांटिटीज वेक्टोरियली बिकॉज दे वर वेक्टर क्वांटिटीज. नाउ वी विल बी एडिंग द क्वांटिटी एल्जेब्रिकली बिकॉज दीज आर स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, तो how we will add and what kind of question you may get or what derivation are based on this superposition principle, that we'll discuss in tomorrow's class. तो आज इतना ही रहने दो, rest we'll discuss tomorrow. Clear? Yes, sir. Bye everyone. We'll meet tomorrow inshallah.